हेलो एवरीवन वेलकम टू वॉइस ऑफ। सो आज जो आर्टिकल्स अच्छे में 22 सेप्टेम्बर 2023 सेप्टेम्बर देखा। तो सेप्टेम्बर फास्ट आर्टिकल जी आम देखा इंडिया कैनेडा रिलेशन आम देखा दैट इज द ऊपर अच्छी द रिलेशन। सेकेंड आर्टिकल आमर रही इंडिया कैनेडा रिलेशन उपर रही। देन आम थर्ड आर्टिकल एंड द फोर्थ आर्टिकल को जो जोटा आम जगमोहन रेड्डी तीनटा कैपिटल को लेकिन जमी तुम कुर्नूल अमरावती एंड वाइजाग तापर गोटे आर्टिकल रही। देन B20 उपर गोटे आर्टिकल जोटा कि G20 को कम्प्लीमेंट करे। सो दीज आर द आर्टिकल्स। फटाफट में आर्टिकल्स को देखिए कि इंडिया कैनेडा मस्ट स्टॉप रिटालिएशन रिटर्न टू द टेबल। सो जदि आम देखिए इंडियन एक्सप्रेस जो फास्ट आर्टिकल रही जोटा कि साइड स्मॉल आर्टिकल्स रही जो कहुई कि जो रिटालिएशन रही दुईटा कंट्री भितर both the country must comes to the table to have the talk and to resolve the conflicts that would be the talk। तो एथिरे कौन होची ये डिस्प्यूट कहीं आसला। तो आ पूर्व आम डिस्कस कर डिस्प्यूट कौटी स्टार्ट है देखा दैट इज बट हरदीप सिंह निजार डेथ केस को नहीं कि ना डेथ केस कौन ना हरदीप सिंह निजार जे कि गोटे वांटेड टेररिस्ट इंडियन गवर्नमेंट ताको गोटे टेररिस्ट एक्यूज्ड टेररिस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट and he's been sheltered in the Canada for the long period of times and who was killed recently 2 months ago near in a what religious place in Canada। तो Canada रे तांको मार देचंती some unidentified peoples in the Canada। ओके ना दिस टॉपिक जहाँ को नहीं कि कैनेडा गवर्नमेंट अक्यूज करिछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो माने मारी चंती हरदीप सिंह निजार को who used to be and he is the that is the citizen of whom itself the citizen of is Hardeep Singh Nijjar is the citizen of what Canada रो citizenship तांका पाखर अछि। तेणुकरी जेहेतु कैनेडार सिटीजन को कैनेडा रे मारा जाउछि बा कैनेडा रे ताको मारी चंती कैनेडियन सिटीजन्स कैनेडियन सॉइल रे दैट वुड बी व्हाट दैट इज द वायलेशन ऑफ द सोवरेनिटी बोली कहउचंदी के जस्टिन ट्रूडो। तो ट्रूडो कहबा कथा कि कैनेडियन सॉइल रे इंडिया स्पॉन्सर्ड करिछि ताको इंडिया स्पॉन्सर्ड मतलब आम देख यहाँ मुझे लाइन को पढ़ौनी बस मुझे कहूँ यार एसेंस तापर आम लाइन बाय लाइन जावा कौन अच्छी। तो दैट मीन्स आम कौटी कौटी ना कौटी सोवरेनिटी को हट करुच्छे बोले कैनेडियन गवर्नमेंट कहवा कथा कि दैट इज हटिंग द सोवरेनिटी ऑफ द कैनेडा एज दैट कैनेडियन सिटीजन इज बीन किल्ड इन द कैनेडियन सॉइल with sponsored state sponsored by the Indian authority that he has been accused, but the Indian government has clearly denied the fact and the evidences। Indian government has sought the evidences based on that allegation जा भी हो। So that means I'm blaming the organizing cleaning at the death जो killing and the death by what जोटा कि आम के डेंजर कर जोटा ट्रूडो कहया कथा that is the world largest democracy and the brought that is what disrepute the world largest democracy जोटा कहउचंदी ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो कहउचंदी एटा होची टेररिज्म स्पॉन्सर्ड इंडिया ताको स्पॉन्सर्ड करूची बोले दैट मींस हमको कोठी ना कोठी सेम करे पेन ट्राई कराउची। इंडिया हैज क्लेम्ड दैट द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट शेयर एनी इनफॉरमेशन कौन से शेयर करना G20 समय मध्य करे नांती। तेणु जो 6 एक्सट्रीमिस्ट जो मैंने कैनेडियन गवर्नमेंट सेटल बा सेल्टर दौरान है ना जो मैंने कि प्रो खलिस्तान। तेणु ये जो लोग थे हरदीप सिंह ये जड़े प्रो खलिस्तान जहाँ से सेल्टर दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टू टाइम एंड अगेन रिमाइंड द कैनेडियन अथॉरिटी नॉट टू सेल्टर दोज पीपल्स इन द नेम ऑफ द व्हाट दैट मीन्स आम कह जहाँ को कहुए फ्री स्पीच फ्री अमुक ये सब ना सेल्टर न दबाटा कथा। हाँ बुझे तेणुक ये इश्यू बर्तमान गोटे एमती स्टेज को आसिक पहुँची जाइए जो द एक्सपोल्जन ऑफ द डिप्लोमेट्स। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज एक्सप्लोर्ड द डिप्लोमेट्स इंडियन डिप्लोमेट्स एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो टिप फॉर टैप ये एक्सप्लोर कर डिप्लोमेट्स को। देन द डिप्लोमेट्स साइज ऑल्सो रिड्यूस ये दैट मीन्स आम चलती दैट मीन्स टिप फॉर टैप चलती। द कैनेडियन अथॉरिटी आमर एक्सपो दैट मीन्स आमर जो आमर एम्बासी अच्छी कैनेडा तार साइज कमाई कहते टिप फॉर टैप एक्सपोल्जन ऑफ द डिप्लोमेट्स एंड द सस्पेंशन ऑफ द कन्सुलर सर्विसेज ऑल्सो कन्सुलर सर्विसेज सस्पेंड हो जाइए। सिटीजन्स मान को कहुई जो मैंने कैनेडा जाऊँ यू मस्ट बी रिमेन विजिलेंट सेमती कैनेडियन गवर्नमेंट कहते वन ऑफ द व्हाट मोस्ट दैट इज व्हाट प्रेफर डेफिनेशन फॉर द इंडियन माइग्रेंट्स जदि आम कहवा। तेणुक ये रही टॉपिक तेणु ये कैनेडा जो इंडिया कैनेडा रिलेशन कोठी ना कोठी गोटे लोएस्ट लेवल रे जाइए पहुँची। सेम टॉपिक उपरे आम देखा ओनली आम गोटे डिफरेंट एंगल देखा ये तुम समरी थिला
it was summary of the India Canada relation, but this would be from a different angle. एटा तुम आउ डिफरेंट एंगल रो हमें देखिबा ये जो बड़ आर्टिकल टा रही एथरे इंडिया हम यूएस रिलेशन को केमिति चाहूची मैनिपुलेट करिया पे कि कनाडा, सो कनाडा चाहूची कहार हेल्प कि यूएस रो हेल्प टू रिजॉल्व द इश्यूज टू कॉर्नर द इंडिया को कॉर्नर करिया पे से यूएस रो हेल्प चाहिए बिकॉज दे आर हैविंग व्हाट ए टाइट बॉन्डिंग तांकर गोटे कोन अछि टाइट बॉन्डिंग अछि। तेणु ये अथर आम देखा दैट इज द फॉर्मर डिप्लोमेट जी कहते कि द समिंग द ऑटोवा क्लाउड्स डेली टाइट विद द वाशिंगटन टाइज विद द वाशिंगटन दैट मीन्स आम देखा फ्यूमिंग द ऑटोवा क्लाउड्स दैट मीन्स आम देखा कौटी ना ये ऑटोवा दैट मीन्स द कैनेडा विल टेक और दे आर ट्राइंग टू टेक द हेल्प फ्रॉम द वाशिंगटन टू एंगेज विद इंडिया और एंगेज तो मुझे कह काउंटर भी कहीपर आम चाहिए जब यू इंडिया हैज बीन ड्रॉइंग क्लोजर टू द यूएस with the Indo-Pacific strategy and the Canada wants US support in ways and accusing the finger at India बुझे तो दैट मीन्स ये चाहूँगी इंडिया को एक्यूज करने यूएस रो हेल्प नब बोली चाहूँगी कि इंडिया इज द एक्यूज्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन कनाडा जहाँ भी हो। तो द टेंशन बिल्ड अप बिटवीन द इंडिया एंड कनाडा रिलेशन एटा समस्त जानछ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर साचे है ना जो थोड़े सम हार्ड द गिव दैट मीन्स हमके सम थिंग्स हार्ड टू गिव with the nationalist that is what love is in India's have been that is relentlessly that is taunting Canadian authorities and the allies that is what that is the that is laka classical's attitude towards the so-called आम के खालिस्तानी मिलिटेंट ये जो खालिस्तानी मिलिटेंट ना जो मान को सेल्टर दौच जदि आम कैनेडियन अथॉरिटी कहूँ द किलिंग ऑफ दिस निजार इज द व्हाट violation of the sovereignty of the Canada, then what will happens to us? Same also apply to us because they what they did to the New Delhi जेतरा न्यू दिल्ली रे जो माने आसे की जो प्रो खालिस्तान मिलिटेंट माने आसे की जो माने जो रैली करते ट्रैक्टर रैली कले बहुत सारा डैमेज करेले कैपिटल्स को बहुत सारा हर्डल्स क्रिएट करेले तो ये कौन थिला व्हाट वाज दैट वाज आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय द कनाडा is not it that was from the time and again the government of India remind the Canadian authority to refrain and sheltering and sponsoring the I would say what pro Khalistans and आम कह जो खालिस्तान जो पंजाब जो प्रो खालिस्तान लीडरशिप अच्छी सेल्टर करने बारंबार मना कराई दैट मीन्स आम देखा द ऑटोवा thrown the balls into the right Indian court estimating perhaps verification of the campaigns against that is what आम कह orchestrated New Delhi तो से कह वेरिफिकेशन पे कराई a senior Indian diplomats को expelled करा जाइए whom the Canadian terms कहले कि intelligence officials है ना intelligence official कही कि ताकू कोई गला कैसे intelligence collect करचुंती ताकू सेतमी expelled कराई अमेरिका रे जति हम देखबा न्यूज जोटा कि कहबे कि नेशनल पब्लिक रेडियो ए स्टेट एफिलिएटेड जति हम केबा मीडिया रिपोर्टेड कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड द चीफ स्पाई एजेंसी visited New Delhi to confront with the Indian intelligence agency with the but incriminating materials जो materials जो पठे से कैनेडा रो दैट मीन्स हम कहबे कैनेडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटी बा हम कहबे स्पायर हेड अथॉरिटी से इंडिया को आसीबे जो मटेरियल बा एविडेंसेस अछि ताकू नेके डिबेट हबो that means the Prime Minister Justin Trudeau stated in Canadian Parliament on Monday. Over the past week, the Canadian Security Agency has been actively pursuing credible allegations and the potential links between the agents of the government of India and the killing of the Canadian citizens. कहिबा कथा कि ट्रूडो दैट इज तांकर हाउस ऑफ कॉमन रे कहछन्ती कि जो निजार डेथ जो माने मारी छन्ती जहाँ भी दे आर हैविंग स्ट्रांग रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिस इज बीन स्पॉन्सर्ड तो से कह कथा मोदी गवर्नमेंट कोऑपरेट करिया दरकार टू बॉटम ऑफ दिस सिचुएशन टू व्हाट टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ द मैटर ए मैटर रो पूरा गोटे तन्न करिकी आम डिस्कस करबा हेतरे मोदी गवर्नमेंट हेल्प करिया दरकार जब यू what can't be ignored that the Trudeau spokes of the press the what matter personally the US president तो एथरे मध्ये कहछि कि जो जस्टिन ट्रूडो मध्ये ही पर्सनली यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन सहित मध्ये कथा हेतिबे जो थरे इन्वेस्टिगेशन कथा नै कि उठिछि व्हाइट हाउस मध्ये नो समथिंग्स वी डोंट हना तो एथरे आमे किछि कथा कोनी कि उठि व्हाइट हाउस सहित से माने डिस्कस करितिबे जेहेतु सेवनकर भीतर स्ट्रांग रिलेशन अछि जाबियो ट्रूडो हु इज दैट मीन्स आमे के बाद थ्रोवेट द पॉलिटिकल श्योरली that means some factors in the affair with the potential severely damage to the Indian relation with Canada. Yes, we want to hide before
दैट इज गोइंग सो दैट मीन्स आमको आगु टिके बढ़िया पड़ो जहाँ भी हो। तो ये जो यूएस रहा सहित रिलेशन को आम देखा कौटि ना कौटि यूएस एंगल को से टच करने चाहूँगी। इवेन आम देखा नो डाउट व्हाइट हाउस रिएक्शन ट्रूडोस रिमार्क्स को आमके स्लैंटेड इन फेवर ऑफ कनाडा दैट मीन्स यूएसए मध्य क्या सपोर्ट करेंगे ओबियसली कनाडा को सपोर्ट करिवो। हाँ बस आम देखो व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन वी रिमेन इन द वट रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द कैनेडियन पार्टनर्स इट इज बट क्रिटिकल कैनेडा's इन्वेस्टिगेशन proceed and the preparators to brought the justice के कही एटा यूएसए कही कौटि ना कौटि यूएस सपोर्ट करुच्ची ना दैट मीन्स आम जदि इंडिया कनाडा रिलेशन को देखा कौटि कौटि यूएस एंगल भी आसी जाइए ना एक्सटर्नल्स आमर जो आमर एक्सटर्नल मिनिस्टर होती जयशंकर कहा कथा कि देख ना ये जो टीवी चैनल कहा कथा द वर्ल्ड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रॉब्लम्स मच मोर देन द अर्लियर्स हाउ many foreign ministers at the global stage today would that means ये कहे जो वेस्ट रो एभले एलिगेशन जाए चलता है तांकर जो assumption and the gumption to say such things at वेस्ट जयशंकर से कहले कि देखो ये जो ग्लोबल साउथ रो जो मिनिस्टर माने अछंती ना जो माने डिफेंस मिनिस्टर बा ग्लोबल साउथ जो से माने जानि छंती कि ये वेस्ट रो प्रोपागेंडा कोन वेस्ट कोन करंती वेस्ट कोन एलिगेशन आनंती ताको जानि छंती सो हमको दरकार नहीं दैट मीन्स हमें देखिबा एबे न्यू दिल्ली के आसी तो ऑथर मध्य कहवा कथा जो फॉर्मर डिप्लोमेट कहवा कथा कि ये जो ना जो यूएसए आमको जो सपोर्ट करूची को बेसिस से सपोर्ट करूची ओनली निजर इंटरेस्ट सपोर्ट करूची एंटी दैट मीन्स हम कहवा एंटी चाइना अलायंस जो सपोर्ट करूची जदि हमर चाइना से तो भलो रिलेशन थांता ए मैटर यूएस तुरंत आमको कौन करता है यूएस मध्य आमको साइड कॉर्नर कर दे था यूएसए रे तो यूएसए सिंपल आम जब यूएसए टिके अधे इंडिया को सपोर्ट करूची ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डिसकंटेंट वेस्ट टुवर्ड्स द माइंड ऑफ दैट मीन्स आम कहबा ये सबु बेले देखंतु वेस्ट रो सबु बेले इंडिया प्रति केबे भी भल पाइबा नथिला कौन आज भल पाया जो देखौची ये ओनली द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज दैट इंडो चाइना रिलेशन जदि आज ये जो कॉर्डियल रिलेशन होची ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेन रिलेशन बिटवीन द इंडिया चाइना दैट हैज बट द क्लोजरशिप और द फ्रेंडशिप ऑफ द डेवलप्ड ऑफ द इंडियन यूएसए अदरवाइज वेस्ट के भी भल पाइबा देखाइनी दे हैव नेवर शोड द लव एंड द अफेक्शन फॉर द कंट्री लाइक इंडिया दे ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड एंड बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो दे आर ओनली आम कहबा सपोर्टिंग द इंडिया एंड क्वाड वगैरह जो तुम साइंस ईस्टर्न वेस्टर्न क्वाड कथा नहीं जाओ कि ईस्टर्न क्वाड कथा नहीं जाओ तो ये सबू द पैराडॉक्स इज द की रिमेंबर दैट इज द वेस्टर्न अलायंस एंड द क्लोज ally of the USA Canada plays an important role in the US that is what establishing a so-called rule-based international order and promoting the Pacific strategy in the India as a what takers of तो तेणु करके ये मैंने चाहती कौन कि सो कॉल्ड जो ग्लोबल ऑर्डर को एस्टाब्लिश करने पे चाहती से इंडिया को न नेले से मैंने जो आम कौन दैट इज इंडो पैसिफिक रिजन रूल करें ना तेणुक कौटि ना कौटि इंडो पैसिफिक स्ट्राटेजी जोटा अचीव करने से चाहते न्यू दिल्ली को कोऑपरेट कर गोटे रीजन अदरवाइज रीजन किसी भी ना तेणुक अदरवाइज जदि आम देखा यही दिगरे यूएसए कही पारती कि ठीक अच्छे जहाँ भी इनसीडेंट होती ऑटोवा और दिल्ली भितर आम रिजल्व करदे थ्रू द टॉक्स ताकू काम करने वाटर को काम करने चेष्टा करेंगे यूएसए अदरवाइज यूएसए आहरी बॉइल्ड कर जस्ट बिकज ऑफ हाविंग निजर इंटरेस्ट को माने कहबा सैटिस्फाई करने से कह कि हाँ केमती रिलेशन को काम करा तो ये रहिबो एंगल देन आम जो आसवा कि जो तीन टा कैपिटल इश्यूज को नहीं कि हाँ तो समस्त जानी दैट मीन्स आम जो पॉलिटिकल बा लेजिस्लेटिव कैपिटल होची अमरावती तांकर बिजनेस कैपिटल आ गोटे होची एक्जिक्यूटिव कैपिटल बिजनेस कैपिटल होची तार कुर्नूर सॉरी दैट इज द बट आम जुडिशियल इन कुर्नूर एंड एक्जिक्यूटिव इन विशाखापट्टनम तो तीन टा लेजिस्लेटिव अमरावती एक्जिक्यूटिव विशाखापट्टनम जुडिशियल कुर्नूल ये जो तीन टा रही कैपिटल तो कौटि ना कौटि डिसेम्बर अमरावती रे काम करने जगमोहन रेड्डी रेड्डी होती तो जगमोहन रेड्डी जदि आम देखा तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन अच्छी अमरावती को लेकिन सेटा आज पर्यटन क्लारिटी आसी ना कि ये जो करेन्ट कैपिटल जोटा अमरावती सुप्रीम कोर्ट केस पेंडिंग अच्छी सुप्रीम कोर्ट मध्य कहते कि डिसेम्बर पूर्व केस को डिस्पोज कर मैटर जो हियरिंगटा डिसेम्बर हम तेणुक बर्तमान तेणुक से जानी शुणिकी आम कह अमरावती कौन सेसन करूना दैट इज वाई दे आर मूविंग टू द आम कह कौटी वाइजाग को चाहते सो द गवर्नमेंट
pleaded for the urgent hearing against the Amravati, but Supreme Court कहते कि December ही hearing हबो ता पूर्व ही परिबो नहीं तो given the mind to the work from the Visakhapatnam सेति पई कोन कले दशहरा रे एई दशहरा रे सेमाने विशाखापट्टनम रो काम करबे जोटा कि स्टील प्लांट सिटी लॉजिकली दैट इज द व्हाट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हम केबा कैंप वाइजाग रे एग्जीक्यूटिव अछि त सेठु से काम करबे ना एथरु काई काम करबे करना तुम समस्त जानचो ये गोटे ताप नारा रहिबो इलेक्शन कैंपेन रो गोटे नारा हेजबो तेणु करके एटा को से एठी करूछंती नेक्स्ट हम एसबे जी B20 ना प्रथम कथा B20 कोन B20 इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज तो ये कौन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज दैट इज द B20 ना ये B20 कौन करे बिजनेस ऊपर डिस्कस करे केमती बिजनेस को प्रमोट करा जबो कौन करा जबो दे टॉक अबाउट द बिजनेस दे टॉक अबाउट द व्हाट बिजनेसेस ऊपर दे टॉक अबाउट द बिजनेस The India saw hugely successful जब इंडिया में देखा saw huge successful of the G20 summit जो थे global appreciate करते every leaders of the around the nook and corner of the globe they appreciate the mediation of the India and the way India handled the G20 leaders and the organized happy kotla that shows the prowess of India and India's diplomacy. Over 200 meetings were arranged in the more than 60 cities in more than what and even 60 cities across the countries and that means it has successfully hit the G20 so G20 facts man rakho 200 meetings 60 across the 60 cities in the country under the B20 I mean that is the conference of the Indian jodi ke amar business leader hoichi 100 event which brought to the business together to discuss the global challenges तो ये जो B20 अंडर कौन होइछि एज ए सेक्रेटेरिएट ऑर्गन 100 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराइछि केमिति ग्लोबल सिनेरियो जो हमर ट्रेड सिनेरियो रहिछि बा ग्लोबल चैलेंजेस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स हाउ दैट वुड बी डिस्कस्ड सो इंडियन हम के स्पिरिटेड इकोनॉमिक रीबैलेंसिंग आपको कोन कहजबे इकोनॉमिक को रीबैलेंस केमिति करा जबो तापर डिस्कस हेतला ओके गो थ्रू B20 रे हम कहबा ना दैट मींस हम टेक द इंडस्ट्री को दे देखबा द की टेकअवेज फॉर द इंडस्ट्री इज दैट the India has strengthened its leadership in the global economic arena. जदि हम industries मानको देखिबा the New Delhi leader declaration steer that is but conversation of the global response to the major challenges towards the need of the developing economics. The changes दरकार that means ये voice मध्य हमें देखा पड़िबो. This is but reflected in the inclusion of the African Union. The African Union को जेतला में include कले that shows the what inclusivity and the global response to the major challenges and the changes major challenges and the changes जाउची ताकू देखि कि अफ्रीकन यूनियन को मिसेइबार बहुत जरूरी थिला जहार देखिबा 1.4 बिलियन लोक रोचंती थ्रू ट्रिलियंस जीडीपी ओवर द थ्रू ट्रिलियन ओके तेणु करके ये रहिबा थिला सो अफ्रीका रे नेचुरल रिसोर्स बहुत अछि इकोनॉमिक वैल्यूज अछि ह्यूज हम के गैप्स रहिछि सब कॉन्टिनेंट रो आम कहबा बुझि पड़छ तेणु कोनी अफ्रीका को मिसेइबार बहुत जरूरी थिला जोटा इंडिया करिछि B20 रो स्पेशल एक्शन काउंसिल जोटा कि ऑन अफ्रीका हेतिला जो थरे कॉल्ड कोच कि अफ्रीका रो जति हम ह्यूमन कैपिटल कथा नै जो इंफ्रास्ट्रक्चर कथा नै जो तार ओके तार डिजिटल इकोनॉमी कथा नै जो ट्रांसफरिंग द इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होची सर्विसेज ग्लोबल सर्विसेज कथा नै जाओ तो ये सब को से डिस्कस करछंती वी आल्सो वार्मली वेलकम एम्फासिस ऑन द क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज वेल ये सब ऊपर डिस्कस करा जाईची जब यो the B20 on the B20 we divided deep into these issues को हमें divide करिछु in a particular issue of the countries contributing to according to their development status तो हमें ताकू G20 करछु ना G20 रो एबे तापरे से ये B20 पर हम G20 को हमें सिबा ना दैट मींस हमें जति हमें G20 हमें देखिबा जो G20 रो डिक्लेरेशन थिला सेटा तमे समस्त आगु भी पढि जाछे हाँ ना G20 कौन डिक्लेरेशन कौन कहछि ना हमें वर्क करबा जति जेमति हमर सस्टेनेबिलिटी आनिबा तो दैट मींस हम कौन रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ द बिजनेस इन द वे ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एंड प्लेस टू वर्क प्राइवेट सेक्टर विथ द प्राइवेट सेक्टर सहित मध्य हमको काम करियर अछि तो जदि हमें B20 रो जो बिजनेस हम केबा डेली लीडर होची डिक्लेरेशन दैट वर बैकिंग द स्मॉल कंपनीज एंड द सस्टेनेबिलिटी एफर्ट तो ये जो B20 स्मॉल कंपनीज को बैक करिया पिंग कहछि एंड सस्टेनेबल एफर्ट रहिबा दरकार तो प्रायोरिटी ऑफ द दैट मींस हम कहबा जो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन को हमें डेवलप करबा दरकार ये कहछि B20 रे ओके दैट मींस ये मध्ये B20 रे करा होची बाकी B20 जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कथा कहती जोटा ऑलरेडी में पढ़ी छे ना सेथरे मध्ये हमें पार्टिसिपेट करि परिबा
हाँ कि नहीं देन आमर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जोटा आम देखी एशिया यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर ताकू आम देखीचे एटा जो आमर रेल सी ये सब को लिंकेज करा एशिया दैट मीन्स वेस्टर्न आम कह एशिया पोर्ट भाया द यूरोप यूरोप को आम कनेक्ट कर इटली ग्रीस फ्रांस ये सब कनेक्ट हो ये तो ऑलरेडी आम पढ़े मिडल ईस्ट इकोनॉमिक दैट मीन्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड यूरोप देन what the success of G20 world is sees India as a stronger powers on the global stage ना इंडिया को वर्तमान वर्ल्ड देखो एज ए स्ट्रॉन्ग पावर द वॉइस ऑफ द लीडर ऑफ द साउथ द ग्लोबल साउथ बायोलेटरल मीटिंग बहुत सारा है ना जमती बायोफुएल्स उपर इकोनॉमिक कॉरिडोर उपर इंक्लूजन ऑफ द अफ्रिकन यूनियन उपर टॉक है साइड बाय साइड में कहबा बिजनेस एरिया ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी इंडिया रे को फैक्टरीज ओपन से परिबो इंडिया रे बिजनेस कौन अपॉर्चुनिटीज अच्छी तो ये सारा आम G20 आमको देछि ओके तो आज जदि आम देखा डिबेट रे ये सब आम इंपोर्टेंट आर्टिकल्स देखी है ना तो विथ दिस आई विल एंड द सेशन ऑफ द टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन आम खत्म कर देबा थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे टू ऑल